के अंदर अंदर रहते हुए I think it's the shortest Taraveeh you're gonna find. Allah Ta'ala कबूल और मंजूर फरमाए. We read Surah Ar-Rahman in my melodious, beautiful voice. So, दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए. Inshallah. Since I've come in the cough, I think there's a virus, I don't know, something put my throat, I've just given up on me. So, अभी शबीना भी सुनाना एक बार. So, Allah Ta'ala खैर करे इंशाअल्लाह. Surah Rahman, I was telling the mu'takifin today that when Surah Rahman was revealed, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said to the Sahaba, who will recite this surah in front of the kuffar? कौन ये सूरत पढ़ेगा? So when Abdullah bin Mas'ud, Sahabi Rasul, he said, Ya Rasulullah, मैं जाता हूँ. And Abdullah bin Mas'ud, he was a young Sahabi, very weak, thin legs, thin arms, and skinny, chota. An example I gave was, should I give the example? Chalo. Is one of our mu'takifin, his name is Abdullah. He's short and high, very skinny legs, skinny arms. And I said, he resembles Abdullah bin Mas'ud. And he was that, Abdullah bin Mas'ud was like that. So, he gets up and says, Ya Rasulullah, मैं जाता हूँ. मैं जाके Surah Rahman पढ़ता हूँ. I'll read Surah Rahman in front of the kuffar. So, he comes in front of the Hatim. Hatim, remember, is on the right hand side of the Quba and is that semicircle. So he stands in front of the Hatim. And he starts to recite Surah Rahman. Abdullah bin Mas'ud. And he starts Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaqa al-Insan, Allama al-Bayan. Now what happens? Abu Jahl comes. The Pharaoh of this Ummah, Abu Jahl. He comes and he tries to stop Abdullah bin Mas'ud. He carries on going. What happens? He gets really angry that he slaps Abdullah bin Mas'ud on the air. Kaan pe thappad laga. So hard that he started to bleed. Kaan se khoon nikla. The learning point from here is, abhi aage chalta hu. Learning point from here is, if by acting upon the deen, someone says something to you, to ghabraye na. Don't worry, because this happens. Deen pe jab काम करे ना, तो बोलने वाले जरूर बोलते हैं. किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते. सही बात कर रहा हूँ. लोगों ने अंबिया को नहीं छोड़ा. People didn't leave the Anbiya alayhi salatu wasalam. It's a reality. आज मस्जिद में कुछ हो जाए, ओ ये होगा वो होगा. ये नहीं पता कि ये काम जो है ना, अगर ये काम करना है ना, तो आगे बातों के लिए भी तैयार हो जाए. Get ready for criticism to come towards you. ये दीन का काम आसान नहीं. उलमा इकबाल का क्या शेर है कि लोग समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना. उलमा इकबाल का शेर है. लोग समझते हैं आसान है मुसलमान होना. You think it's easy to become a Muslim? No. बड़ा मुश्किल है. Very hard. So that's the learning point from that one thing. फिर क्या हुआ? Abdullah bin Mas'ud, he comes back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huzur ke paas hai. And what happens? He's crying. रो रहे हैं. As he would do, he was young Sahabi, 15-year-old. And he comes in, Mullah Adnan arrived, Nare Takbir. Allah. He just arrived, please.
धूम इशारा कर रहे ना, मुस्कुराहट पहले करेंगे. So he comes and he's crying, and behind him Jibreel is there, and Jibreel is smiling. And alayhi salatu wasalam, he sees Abdullah bin Mas'ud and Jibreel. One's crying, one's smiling. You get it? एक रो रहा है, एक मुस्कुरा रहा है. So he said, he alayhi salatu wasalam starts to smile. Now imagine, your बेटा, दोस्त रो रहा है, और आप हंस रहे हैं आगे से. देखो मेरा उसमें उन्होंने, या रसूलुल्लाह, he said, या रसूलुल्लाह, I'm crying, you're smiling. You should be with me in this pain. तो ये क्या? He says, पता चल जाएगा इंशाल्लाह. Over time, you'll understand. Now when Badr happened, Badr जब वाक़या हुआ, what happens? You heard the story. Ma'ad and Mu'awwaz, they injured Abu Jahl, brought him to the ground. Now after the battle had ended, Badr, Abdullah bin Mas'ud, he walks around the battlefield fighting an enemy. And he finds who? Abu Jahl. He sits on his chest. Abu Jahl on his last breath says, who's won the war? And what happens? Abdullah bin Mas'ud said, Allah gave victory to the Muslims. He said, Abu Jahl, cut my throat, but not from my neck, just below my chest. Hey. So people know that I've been killed, not by throat, but slightly lower. Arrogance. So Abdullah bin Mas'ud, a weak Sahabi, physically, he cuts his head off, throw off, and now he tries to hold the head on the siripara, on the booty, bombardier. That's the right word you use for him. His face was too big. So he, weak Sahabi, tried to hold the face. Now imagine on the booty 10 kilo the on the buta 10 kilo the 15 kilo the, and he tried to lift it. You won't be able to do it. गोश्त लैंड जाओ ना, 10 किलो तो गोश्त लैंड जाओ, तो बंदे तो वैसे ही बहुत थक जाते हैं, वो वैसे ही ब्लास्ट की. So what happens? He's there trying to hold on to his head, who can't do it. So what does he do? He makes he screws his head, makes a circle in his head, gets a rope, puts it into his head, and brings it like a dog to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. कुत्ते की तरह उसका चेहरा लेके आया हुजूर के पास. Now, when Abdullah bin Mas'ud, he enters the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam like this, कुत्ते की तरह, Abu Jahl का सारा. Now happens, Abdullah bin Mas'ud enters, and behind him Jibreel smiling like he was smiling before. वही तरह, smiling again. And alayhi salatu wasalam looks at Abdullah bin Mas'ud, looks at Jibreel, and he's smiling again. I say, Ya Rasulullah, why are you smiling? He says, I saw Jibreel. I saw Jibreel, and he said, Al-Udhun bil-Udhun. कान के बदले कान. उसने तुझे थप्पड़ मारा और तुझे कान में दर्द हुई. आज वो पूरा हो गया. आज तूने उसके कान में सुराख करके उसको इस तरह कुत्ते की तरह लेके आया, कान का बदला कान पूरा हो गया. ये पूरा हो गया. This is, ये रब ताला के काम है. और इससे एक सबक और मिला कि जालिम अगर जुल्म करेगा, the oppressor oppresses you, don't worry. क्यों? इंतकाम करने वाला रब की जात है. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will fulfill it, and he will be equal, if not on this earth, in the hereafter. जरूर आखिर में रब ताला उसको जरूर पूरा करेगा. तो घबराने की कोई बात नहीं. ये जुल्म करने वाले जालिम ये दुनिया में रहे नहीं, खत्म हो गए, नामो निशान खत्म हो गया. These people, these oppressors, these zalim people, they finish, their name finishes, no one knows who they are. कोई पता नहीं कौन है. मैं आपको मिसाल दूं from the books of history. Ali was mentioning today, Malik bin Ashtar,
नाम सुना पहले? कभी नहीं सुना मालिक। उस मालिक बिन अश्तर, ये सहाबा का कातिल है। He killed the martyred the Sahaba. ये आपको पता ही नहीं, धोखे नवाब है ये बंदा। देखें, जालिम जुल्म करने वाले खत्म हो गए ना। Just in the history books, you remember them in history. Same with Abu Jahl, he's only in history books. Where is he? कोई पता नहीं। So डरने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रब पे भरोसा रखें, रब पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह उसी के सिद्दे की कामयाबी है। अल्लाह ताला हम की तौफीक अता फरमाए। दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह, हमारा ये तरावी पर पढ़ना कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, जो हमने कुरान पाक सुनाया, या अल्लाह वो भी कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, ये जो 1-2 दिन रह गए रमज़ान में, या अल्लाह अपने रमज़ान के सदके हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा, गुनाह को नेकियों में तब्दील फरमा। और या अल्लाह, रमज़ान के सदके जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किल को दूर फरमा, जो कर्ज खान को कर्ज से आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग अपने बच्चियों के रिश्तों के लिए मुंतज़िर हैं, बच्चियाँ 25, 26, 27 साल तक हो गए, शादी नहीं हो रही, या अल्लाह उन बच्चियों को जल्द से जल्द अपना घर अता फरमा, उन बच्चियों को अपना नेक मुस्तकबिल अता फरमा। जो बच्चे 30 साल के हो गए, 40 साल का बच्चा हो गया, अभी तक शादी नहीं हो रही, या अल्लाह उन बेचारों को, या अल्लाह उन्हें भी नेक साले रिश्ते अता फरमा। जो सादात वो भी अपने बच्चियों के रिश्तों के लिए मुंतज़िर हैं। सादात का ये है कि बच्चियों का रिश्ते सादात के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं जाते, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। It's more hard for them. अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह उनके लिए भी हाल बेहतर फरमाए। उन बच्चियों के, उन सादात बच्चियों को अल्लाह ताला उन्हें भी नेक साले रिश्ते अता फरमाए। जो भी जहाँ भी जिस भी मर्ज में, जिस भी मुश्किल में है, या अल्लाह तू करीम है, तू रहमान है। या अल्लाह तू सबकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा, सबकी मुश्किलात को दूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।